Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home. I am Mrs. Manpreet Kaur, your history teacher from California Public School. Yes, dear kids, now we have to start the 6th class 6th chapter history, the later Vedic period. And you have to also discuss about the earlier Vedic period. So, in this chapter, we have to discuss about the political organization of the later Vedic period. What is the social and economic life of the Aryans and religion of the Aryans in the later Vedic period, Gurukul system of the education, and we have to discuss about the 4 ashrams. So these things we have to discuss in this chapter. So firstly we have to discuss about the Aryavatra, later Vedic period. What is it? So it starts from 1000 BCE to 600 BCE. BCE means before Common Era. Before Common Era. In this time period, the time goes to backward side, means firstly 1000, then 900, then 800, 600, then at last 0, then after starts the counting forward, then 0, 1, 2, that's like. So that we have to call Common Era, and this is the before Common Era. 0 degree is a date where we can consider at the birth of the Jesus Christ. So, by about 1500 BCE, the Aryans came into Indian subcontinent from Central Asia and settled in the sub-Sindhu region known as the Brahmavatra. And this period is called the early Vedic period. कहते 1500 BCE में Aryans आए थे. They have to come India from the Central Asia. Central Asia से आए थे. From the Indian subcontinent is the southern part of the India. Indian subcontinent part is the southern part of the India. So, and they have to be settled where they have to be settled? Sapt Sindhu region. And that region we have to call it Brahmavatra. So, in this period we have to call early Vedic period. Around 1000 BCE, the Aryans left Brahmavatra and moved eastward and southward into the Ganga Valley. कहते ईस्टवर्ड और साउथवर्ड गंगा वैली की तरफ दे हैव टू बी स्टार्ट मूव क्लियरिंग द थिक फॉरेस्ट एज वेंट अलोंग. जैसे जैसे आगे चलते जा रहे थे दे हैव टू बी क्लियर द फॉरेस्ट एरिया. The period between the 1000 BCE to 600 BCE mark the later Vedic period. उसे हम क्या कहते हैं? Later Vedic period when Aryans settled in the Aryavatra. तो वो कहाँ पर settled हुए थे? Aryavatra is a place. The composition of the 3 later Vedas. 3 Vedas थे Samaved, Yajurved and Atharvaved. Along with the Brahmans, Arankas and Upanishads. These are the peoples of all 4 Vedas happened during this period. इस period में ये सारे Veds हुए थे. Ramayana and Mahabharata. You all have listened very much about the Ramayana and Mahabharata. These epics also composed during this period, later Vedic period में. These 2 epics are the composed. The highlight of the later Vedic period was emergence of agriculture on a large scale and transition of the Aryans from nomadic to settled life. कहते लेटर वैदिक पीरियड की मेन हाईलाइट चीज क्या है कि दे हैव टू बी स्टार्ट डूइंग द एग्रीकल्चर. उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था. एंड द आर्यंस दोज आर द नोमैडिक. Nomadic means they move from one place to another in search of the food. So now they know about the agriculture, they start doing the agriculture, so they have to be start the settled life. Settled life means they have to be live at a one place where they have to be start the agriculture. So
There was a widespread use of iron which revolutionized agriculture. तो कहते उन्होंने iron metal they have to be start using. So iron plowshare मतलब लोहे के, आयरन इज अ लोहा, ठीक है, आयरन एक मेटल है जिसे हम कहते हैं लोहा, उसके उन्होंने पोल शेयर होता है जैसे हल बेटा, जिससे दे हैव टू बी प्लो द फील्ड को प्लो करती हैं. Increasingly used in the agriculture. This meaning that the heavy clayey soil could be turned over better than the wooden plowshare. तो कहते जो हैवी मेटल था वो वुडन प्लोशेयर से बेटर था. Iron is a hard metal, so it's a better than the wood. Excavation near the Ganga plains. Excavation मतलब खुदाई के दौरान जब गंगा प्लेन की खुदाई की गई. The three later Vedas and the epics provide information on the political, social and economic life of the Aryans in the later Vedic age. कहते जो एपिक्स थे, वेदास थे, उन्हें हमें पता चला उनकी पॉलिटिकल लाइफ क्या थी, राजनीति कैसी थी, सोशल लाइफ सोसाइटी में कैसे रहते थे और उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मनी स्ट्रक्चर कैसा था उनका. सो नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. While in the early Vedic period, kings ruled over a small tribes or the clans. कहते अर्ली वैदिक पीरियड में जो किंग्स थे वो छोटी छोटी ट्राइब्स के ऊपर, टाउन्स के ऊपर they have to be ruled. In the later Vedic period, these tribes expand to form large kingdom. कहते जो छोटी छोटी ट्राइब्स थी वो बड़ी होती गई और किंगडम्स की they have to be take the form. The earliest iron kingdom were कहते जो अर्लीस्ट आयरन किंगडम्स कौन कौन सी, कुरु, पंचाला, कोशला, मगधा एंड काशी. दीज आर द अर्लीस्ट आयरन किंगडम्स. द फॉर्मेशन ऑफ लार्जर किंगडम्स इंक्रीज्ड द पावर ऑफ द चीफ और द किंग. कहते जैसे बड़ी किंगडम्स की फॉर्मेशन हो रही थी, जो किंग था, जो रूलर था, उसकी पावर्स भी इंक्रीज हो रही थी. किंगशिप बिकेम हेरिडेटरी. किंगशिप बिकेम हेरिडेटरी मतलब जैसे जो राजा आगे राजा जो होगा उसका बेटा होगा, ठीक है, मतलब हेरिडेटरी थी, उसी हम कह सकते हैं उसी परिवार के आगे राजे बनने स्टार्ट हो गए. ट्राइबल असेंबलीज लाइक सभा एंड द समिति लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस. कहते ट्राइबल असेंबलीज थी, जो छोटी छोटी जातियां थी जैसे कि सभा और समिति, कहते उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई. द किंग्स इन्फ्लुएंस वाज स्ट्रेंथन्ड बाय द रिचुअल्स. कहते जो राजा का प्रभाव था वो सारी रीति रिवाजों के ऊपर, ठीक है, वो बढ़ने लगा. ही परफॉर्म द राजुसा सैक्रिफाइस विच वाज सपोज टू कन्फर सुप्रीम पावर ऑन हिम. कहते उन्होंने परफॉर्म किया कि राजुसा सैक्रिफाइस मतलब जो वो कहेंगे लोगों को वो करना पड़ेगा. The Asmavada or the horse sacrifice was also performed to establish the king undisputed authority over the areas the horse moved unchallengedly. कहते जिस एरिया में हॉर्स को मूव करने की परमिशन नहीं थी, सो इफ दे हैव टू बी मूव दैट साइड, तो वो भी हॉर्स सैक्रिफाइस भी करते थे. मीन्स दे हैव टू बी sacrifice their horse also. So that is the political structure. Means totally under the kingdom. एक राजे के अंडर ही वो सारी ट्राइब होती थी. So that is the political structure. राजा कौन बनेगा? That's the king, son of the king. So Aryavatra and the political structure. That is the later Vedic period, and hope you have to listen, then read carefully from your book. After that, do the assignment related to this video. So take care. Bye bye.